Good morning, children. Let us now talk about another chapter, that is organisms and population. Now, as you can see on the screen, organisms and population. This chapter is actually, it covers the portion of ecology. It comes under ecology as such. And ecology is the study of interaction between organisms and its physical environment. So you can basically say in very simple words, it is interaction between biotic organism, that is living organism, and non-living organism. Now non-living things include various things such as soil, water, even temperature, that all comes under non-living things as such. So if you talk about, if you divide, the ecology is a subject which basically concerned with four levels of biological organization. First one is organism, second one is population, third one is communities, and the fourth one is biome. So in this chapter as such, we have to specially discuss about organisms and population level. A brief discussion of biomes and communities has been given, but detailed discussion is about organisms and population. Now how the organism and how the population interact with abiotic environment and completes its life cycle. Moreover, reproduces also to produce its own kind, or you can say continuation of species. So let us see first of all about certain things. Now, ecology at an organism level is essentially physiological ecology that tries to understand how different organism adjust to its environment, not only for survival but also for reproduction. Now let us talk about two things. The things which are responsible for variation of season, rotation of our planet around the sun, and the tilt of its axis, that cause annual variations in the intensity and duration of temperature, resulting in distinct seasons. आप जानते हो अर्थ टिल्टेड है एक एक्सिस पे, फिर रिवॉल्यूशन जो अर्थ जो है सन की तरह रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, रोटेशन में डे एंड नाइट वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, और रिवॉल्यूशन में आप जानते हो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जो एडजस्ट होती है, और टिल्ट ऑफ द एक्सिस, अर्थ जो एक टिल्ट पे एक्सिस पे टिल्टेड है उसकी वजह से सीजनल वेरिएशंस होते हैं. ये एनुअल वेरिएशन का कॉज होते हैं. दीज आर द कॉजेज ऑफ एनुअल वेरिएशंस. नाउ एनुअल वेरिएशंस includes precipitation also. Now precipitation, you know, even the snowfall and rainfall, both are included in precipitation. Now because of this annual variation, and if you take precipitation also, they are responsible, both of them are responsible for the formation of biomes. कहने का मतलब ये है, अगर आप टेम्परेचर को भी इंक्लूड कर दें और प्रेसिपिटेशन को भी इंक्लूड कर दें, जब हम प्रेसिपिटेशन टर्म यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर भी उसमें इंक्लूड हो रहा है और साथ में स्नो भी इंक्लूड हो रहा है. अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोम्स. नाउ व्हाट आर द मेजर बायोम्स वी हैव? वी हैव डेजर्ट एज अ बायोम, रेन फॉरेस्ट एज अ बायोम, टुंड्रा एज अ बायोम. ये सब बायोम है. इनमें छोटे छोटे हैबिटेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट डेजर्ट बायोम. डेजर्ट बायोम में ओएसिस भी होगा, जहाँ पानी अवेलेबल होगा, वाटर इज अवेलेबल देयर. तो वहाँ का जो हैबिटेट है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एरिया वेयर वाटर इज नॉट अवेलेबल. एक एरिया ऐसी भी होगी जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होगा उसी डेजर्ट में. तो हैबिटेट बदलते रहते हैं. बायोम एक ही है लेकिन हैबिटेट क्या है, उनमें चेंजेस आ गए. ओके, that is because of the regional and local variation which are present in each biome. Now that is responsible for the wide variations in habitat present in each biome as such. Now let us talk about the diagram which is given in the you can see in the figure as such. X axis पे आप देख सकते हैं mean annual precipitation है, y axis पे mean annual temperature है. Both are responsible for the formation of biome. ये major biomes across the world. Now you see, in case of tropical forest, the mean annual precipitation
ranges from about 150 centimeter to about 450 centimeter. That is high amount of rainfall as such. At the same time, you see the annual temperature, the range is very less. See, it is between 25 to 30 degree, between 20 to 30 degree you can say. So the range is less. The range in temperature, average temperature is less, because these areas lie very close to the tropical equator as such. Since you know, at the equator, the mean average temperature, usually the temperature is something around 20 to 25, or you can say 20 to 30 degree, in between that. So variation बहुत कम होता है टेम्परेचर में. ठीक उसी तरह अगर आप डेजर्ट बायोम की बात करें, तो डेजर्ट बायोम में देखिए वाटर जो है वो सिर्फ लेस देन 50 सेंटीमीटर है, लेकिन मीन एनुअल जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है. 5 डिग्री भी है और 25 डिग्री भी है. ठीक है. उसी तरह अगर हम आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा की बात करें, तो देखिए मीन एवरेज टेम्परेचर आप -10 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास है, और प्रेसिपिटेशन बहुत कम है. इट इज़ बिटवीन 20 सेंटीमीटर टू अबाउट 120 सेंटीमीटर. सो ये वेरिएशन है, मेजर वेरिएशन. जो बायोम्स प्रेजेंट हैं उनमें वेरिएशन है. कई तरह के बायोम्स है. कॉनिफरस फॉरेस्ट का भी बायोम आप देखिए, यहाँ पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो 50 से लेकर 250 के बीच में है. सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन कॉनिफरस फॉरेस्ट के बायोम में. जब हम टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री से 15 डिग्री के रेंज में मीन एनुअल टेम्परेचर. So this is the thing with major biomes which are present in the world. You can also see the grassland biome. The mean average annual temperature is something around 10 to 25 degree, and if you see the mean annual precipitation, it ranges from about 50 to 200 centimeter. So that is the case. Okay, ये एक डायग्राम है डिस्क्राइब करता हुआ. You can see the rainforest area, savanna, both lie at a tropical level. In case of temperate forest, you can see the temperature becomes decreases as such. रेन फॉरेस्ट के हिसाब से टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर, वहाँ के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम होता है. सब आर्टिक रीजन, टियाग्रा एग्जाम्पल है उसका, अगेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज. नाउ द कोल्ड रीजन विच इज कॉल्ड एज टुंड्रा और आर्टिक रीजन, here you can see the vegetation is very less and the temperature is very cold. So now these are the major biomes of India. One is the rainfall tropical area, other one is deciduous, third one is arid or semi-arid, that is desert type biome, and the fourth one represent the coastal. देखिए पहला वाला जो है ये आपका यहाँ पे ये रेन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल एरिया कह सकते हैं इसको, ये डेसिडियस है. तीसरा वाला डेजर्ट है और चौथा वाला यहाँ पे कोस्टल एरिया. दीज आर द मेजर बायोम्स प्रेजेंट इन द एरिया. सी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज बायोम्स कंटेन नंबर ऑफ हैबिटेट्स. इसमें बहुत सारे हैबिटेट्स प्रेजेंट होते हैं. कहने का मतलब ये है रीजनल और लोकल वेरिएशन की वजह से, एक एग्जांपल हमने आपको पहले ही बताया था, किस तरह से एक डेजर्ट में एक जगह पे पानी अवेलेबल है तो वहाँ का हैबिटेट अलग होगा, और जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ का हैबिटेट अलग होगा. वहाँ अलग तरह के वेजिटेशन ग्रो करेंगे, और जहाँ पानी अवेलेबल है वहाँ अलग तरह के वेजिटेशन होंगे, अलग तरह का लाइफ फॉर्म्स होंगे. तो हैबिटेट्स एक बायोम में डिफरेंट हो सकते हैं. एक बायोम में कई सारे हैबिटेट्स होते हैं, तो लेकिन वो सारे के सारे एक ही बायोम में आते हैं. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट होमवर्क असाइनमेंट. नाउ नेम द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन बायोम फॉर्मेशन. तो बोथ बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट करते हैं. बायोम फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एक मीन एनुअल टेम्परेचर और दूसरा है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन. दोनों ये फैक्टर मिलकर एक बायोम का फॉर्मेशन करते हैं. शो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल mean temperature and precipitation, that I have already shown with the help of a figure, and that is also given in NCERT book. What are the major biomes of India? I have already explained you. Name the important abiotic factor which affect the formation of different habitats. The soil, temperature, availability of water, these are the main factors
which affect the formation of different habitats. Thank you very much.